बात करते हैं साल 2002 में शुरू हुई वंडरला हॉलीडेज की। 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के मार्केट कैप वाली वंडरला हॉलीडेज अम्यूजमेंट पार्क ऑपरेट करती है। कोची, बंगलुरु, हैदराबाद में कंपनी के 3 अम्यूजमेंट पार्क्स भी हैं। साथ ही ये बंगलुरु में एक रिजॉर्ट भी चलाते हैं। तो अगर रिटर्न की बात करें तो पिछले 6 महीने में कंपनी ने अपने निवेशकों को करीब 100% का मजबूत रिटर्न कमा कर दिया है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम मौजूदा ट्रेंड पर बात करेंगे, किस तरह के कैपेक्स प्लान है, आगे का ग्रोथ आउटलुक कैसा दिखाई दे रहा है। इन सब पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंपनी के एमडी अरुण चितिलापिल्ली जी। अरुण जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है सर आपका जी बिजनेस पे। सबसे पहले तो अगर पूरे ट्रैवल टूरिज्म सेक्टर की हम बात करें तो हम एक अच्छी ग्रोथ बनते हुए देख रहे हैं। जिस तरह के बड़े बड़े इवेंट्स हैं, त्योहारी सीजन शुरू हो गया है, लोग घूमना फिरना फिर से शुरू कर रहे हैं। तो ज़रा बताइए करंट डिमांड ट्रेंड अभी आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ओवरऑल फुटफॉल्स या ऑक्यूपेंसी देखें तो कैसी है? Thank you for having me on the show. Yes, so this Q3 is usually for us a very strong quarter in terms of a lot of festivals and footfalls, retail footfalls. So we are seeing a good trend so far. I mean, it's too early to say, how the quarter is going to pan out. We are not expecting huge growth in footfall compared to last year, because last year we had a huge growth in footfalls. On top of that, we are not expecting a huge growth. But having said that, our ARPUs and our ticket revenues, non-ticket revenues, sale of merchandise, etc., resort revenues, etc., should be growing further. So it's looking good, and also there is a lot of festivals. There's World Cup. There's so many things happening. So I think it should be a good season for us. क्या आपको लग रहा है कि ये जो मैचेस है, वर्ल्ड कप है, इस वजह से आप कह रहे हैं कि पिछले साल के मुकाबले ज्यादा यहाँ पर ग्रोथ नहीं दिखेगी, या कोई और कारण है? No, it's not because of World Cup. Like historically also, World Cup has not really affected us, our footfalls negatively. This year also, we're not expecting it to affect too much. In fact, it usually has the opposite effect. People do come out and spend more money. And we also showcase some of the matches, especially the India matches and stuff like that. So it should be interesting to see how it pans out. What is important for us is to make sure that people are willing to spend on holidays, experiences, outdoor experiences, things like that. So that looks strong for the quarter, so should be good. ओके, तो कोई खास तैयारी है इस बार के लिए, या आप जो यूजुअल आपकी तैयारियां रहती है वही कर रहे हैं? क्या इस बार के त्योहारी सीजन में या इस क्वार्टर के लिए कोई अलग से तैयारी की है आपने? No, this quarter we'll be doing something different and special, which we always do. Every year we do different kinds of promotions and festival, decorations in the park. So this year also you can expect some unique things, which we will be announcing shortly. So every season we do some new marketing strategies and new ideas to draw in crowds. So that will continue. Yes. अच्छा, मुझे ये बताइए, जिस तरह की डिमांड में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, प्राइसिंग ट्रेंड्स टिकट्स के लिए, रूम रेंट्स के लिए क्या होंगे अगर YOY या क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पे एक्सपेक्ट करें? किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अब सेकेंड हाफ में, इस वित्त वर्ष के सेकेंड हाफ में? So this year we are expecting growth in ARPUs and non-ticket revenues because we've seen a much bigger hike in our prices from the beginning of the year itself. Q3 also we can expect good growth in our ticket and non-ticket revenues. We are expecting ARPU growth of between 15 to 20%. And footfall growth may be marginal, because last year we had almost 35 to 40% growth in footfall. This year we are projecting between 5 to 10% growth only. But I think that should be good. I think that should give us a good revenue growth for this year as well. Yes. ये जो आप आरपूस की बात कर रहे हैं, ये आप जो 15 से 20% इंक्रीज की बात कर रहे हैं, ये आरपूस की बात कर रहे हैं फॉर द रेस्ट ऑफ FY24? Yeah, 15% growth in ARPUs what we are expecting. Actually, for the whole year, first year we have done more than that, almost 25%. But on an annual basis, we should do minimum 15%. अच्छा, एनुअल बेसिस पे एटलीस्ट 15% की ग्रोथ तो यहाँ दिख रही है। अच्छा, अब मुझे बता सकते हैं कि अभी मौजूदा स्थिति में जो आपका नॉन टिकटिंग स्पेंड है, आपकी जो कुल आय होती है, उसमें नॉन टिकटिंग स्पेंड का परसेंटेज कितना है, और आप क्या टारगेट रेवेन्यू इसके लिए लेके चल रहे हैं?
The non-ticket revenues this year will grow faster because we have taken many steps beginning last year to improve our non-ticket revenues. We are expecting between 25 to 35% growth in non-ticket revenue for the year. Okay. So I think we are on track to do that as well. अच्छा अच्छा, मुझे आप ये बताएंगे आपके जो पार्क्स हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स, उसमें स्प्लिट्स कैसा है? जो ग्रुप में लोग आते हैं या जो वॉक इन कस्टमर्स हैं, इसका स्प्लिट कितना है और आपका कंफर्टेबल स्प्लिट क्या है? कुछ ऐसे टारगेट्स आप लेके इस बार के लिए चल रहे हैं? So for us, the split between corporates, walk-ins, and groups is roughly 75% walk-ins and 25 to 30% groups. That will vary from quarter to quarter. For example, in our first quarter, we'll have very less groups and more walk-ins. Whereas in Q3, it will be the reverse. We'll see more groups and less walk-ins. So it keeps changing from quarter to quarter. But on an annualized basis, I can comfortably say that between 35 to 40% of our business is groups, but consequently 65% is retail and walk-in, which is I think a big contributor for us. So we do focus more on walk-ins, but groups also help us as pillars. ये जो स्प्लिट है, इसको लेके आप कंफर्टेबल है? इसमें इस साल किसी तरह की बदलाव या कोई अलग स्ट्रैटेजी आप नहीं अपना रहे हैं? No, we are going to maintain our current ratio of groups to walk-ins because we feel we want to focus more on walk-ins and retail customers and also online customers. So we're seeing online customers growing faster, almost 25% growth in online customers. So that I think that momentum we want to continue. ओके इसके लिए कुछ अलग से आप तैयारी कर रहे हैं? आपने कहा कि जो ऑनलाइन कस्टमर्स हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, कितना इम्प्रूवमेंट रहा है और इसको बढ़ाने पर किस तरह का विचार है? The online, as a strategy, we are looking at online first to sell tickets and offers. So from time to time, we are adding new offers all the time. So because of that, the number of people who are using our online facilities like our website and booking engine is growing faster. About 25% growth we are seeing compared to last year also, which I think is good. Then further growth, of course, we are expecting our new projects will come on next year. So I think we can see further growth going forward. ओके आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करूंगी, लेकिन आपने हमारे डिस्कशन के शुरुआत में कुछ प्रमोशंस की बात की जो आप टिपिकली करते हैं इस समय। आपका प्रमोशंस पर किस तरह का खर्चा होता है और क्या उसमें कुछ स्पेंड्स बढ़ाने की संभावनाएं दिख रही हैं? Yes, I mean, we do spend roughly 8 to 10% of our top line on advertising and marketing activities. So this year also we are continuing to do that. Now, the way we spend it will keep changing depending on the season. For example, during the festival season, there'll be a lot of offers, extra park facilities, decorations. We will also have special programs and events during the festival season. So this year we are doing some new events and festivities. So those will be announced shortly. And so that will continue. And we are not seeing an increase in marketing spend for this year, only in line with what our increased revenues that we in line with that we will be spending. अच्छा अरुण जी, हमने थीम पार्क के बारे में तो अम्यूजमेंट पार्क के बारे में तो बात की, आपके रिजॉर्ट बिजनेस के बारे में हम जानना चाहेंगे। क्या प्लान्स हैं रूम्स को स्केल अप करने को लेकर, उसकी ऑफरिंग्स को लेकर, जो आपका बंगलुरु रिजॉर्ट है, और क्या कुछ और रिजॉर्ट्स आप इस लोकेशन में या दूसरी ज्योग्राफीज में प्लान कर रहे हैं? So we have one resort operational in Bangalore, which we are expanding by adding more rooms. That whole process will take 1 year. But resort business has been growing for us, so we are planning to add more facilities to the resort. Add a new bar and a new dining area, etc., and more space for MICE and events. So that focus is continuing. But for us, our geographical expansion will be mainly new parks, which I think we will talk about soon. Resort expansion is only in one location right now. Maybe next year onwards, we will look at adding a resort in another location. ओके तो क्या ये साउथ सेंट्रिक ही रहेगा या फिर आप नॉर्थ में या दूसरे और जोन्स को भी यहाँ पर फोकस कर सकते हैं?
Yeah. So our new projects, one project is coming up in Chennai, which is a large-scale amusement park project, जी and the other project which we are doing is in Bhubaneswar, which is a slightly smaller project, which will open to public next financial year. ओके तो भुवनेश्वर का पार्क नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में शुरू होगा और चेन्नई का That will take 18 months, so अच्छा roughly a year and a half. ओके मुझे बताइए किस तरह की रेवेन्यू ग्रोथ आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब ये ऑपरेशनल हो जाएंगे अगले 1 से 1.5 साल में दोनों पार्क्स जैसा कि आप कह रहे हैं कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ से होगा और ग्रोथ फिर किस तरह से यहाँ से इम्पैक्ट होगी So we expect our smaller park to contribute between 50 to 60 crores in the first year itself, and a larger park like Chennai should contribute closer to 100 crores. ओके जब आप स्मॉलर पार्क एंड लार्जर पार्क कह रहे हैं तो क्या ये निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कितना इन्वेस्टमेंट्स दोनों में गए हुए हैं See, for us, the larger park will cost us between 400 to 500 crore investment, ओके and the small park less than around 150 crores is the investment for the small park. ओके अच्छा ऑल्सो अरुण जी मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग एमपी गोवा पंजाब एंड गुजरात की राज्य सरकारों से भी वहाँ पर नए पार्क सेटअप करने पर बातचीत चल रही है तो आप बता सकेंगे उस पर क्या अपडेट है और कब तक यहाँ पर कुछ मटीरियलाइज होता हुआ कंपनी के लिए दिख सकता है See, these processes take a long time. So we have been invited by various state governments to set up parks. Bhubaneswar was also one of those. In fact, Chennai also, we were invited in Chennai to set up the park way back in 2015. But the project is materializing now. Bhubaneswar is happening much faster, as you know. We are going to open next year. And the next, we are looking at other states like Madhya Pradesh, Goa, Gujarat, Punjab, etc. Some of these talks are in advanced stages, but it's hard to put a timeline on when we will be able to announce it. As and when the projects are ready, we will be announcing it. We hope to announce at least one more project before the year end. So that is the plan. तो ये इसमें भी क्या ये लार्ज स्केल होंगे स्मॉल स्केल होंगे किस तरह के निवेश की यहाँ पर तैयारी हो रही है और क्या ये जो आपके करंट प्रोजेक्ट्स हैं इनसे ये अलग रहेंगे इसके बारे में बताइए Yeah. So, I mean, we will do a mix of large and small projects. The smaller cities we will do smaller projects, and large cities, for example, Noida, NCR area, we're planning a large project. So, and Maharashtra, if we go there, we will be doing a large project. So, the larger cities, we will do large projects, and the small cities like Bhubaneswar and Indore, etc., we will do a smaller project. That's the plan. And see, we want to geographically expand our footprint because we feel that we have a leadership position in this segment. And, we have best-in-class revenues, EBITDA margins, etc. So because of this, we want to expand to new geographies, and we would like to partner with the state governments wherever possible because this is a huge capex investment kind of business. It creates a lot of employment, but also huge capex, and a lot of uncertainty. So wherever possible, we will be working with the local state governments and then setting up the project. Okay. महाराष्ट्र में भी आपने कोई लोकेशंस यहाँ पर आइडेंटिफाई की हैं जहाँ पर आपका इरादा है सेटअप करने का No, nothing in Maharashtra is concrete yet, but we are talking to various stakeholders to see whether we can do a project there. ऑलराइट अरुण जी थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए और विस्तार से पूरी योजनाएं जो है वंडरला हॉलीडेज की दर्शकों के सामने रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसी के साथ कॉर्पोरेट रडार को हम यही रैप अप करते हैं लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा